मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं बॉम्डिला में हूँ। तो कल भालूपोंग से करीब 3.5 घंटा लग गया पहुँचने में बॉम्डिला। तो रास्ता थोड़ा बीच में अच्छा है, लेकिन बीच में बहुत ही ख़राब है। थोड़ा पैचेस मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अगर आप प्लानिंग करें तो मान के चलिए 3.5 घंटा लगेगा आपको, उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। तो कल हम यहाँ पे एक लॉज में रुके, पैंगचे, अच्छा है, ठीक ठाक है। तो आज हम निकल रहे हैं तवांग के लिए। 180 किलोमीटर करीब है, तो करीब 6-7 घंटा लगेगा। तो बीच में एक जंग फॉल आएगा, सेला पास आएगा, वहीं पे घूम के फिर आज रात तवांग में रुकने का प्लान है। कल बुमला पास के लिए देखेंगे, अगर परमिट मिलता है तो जाएंगे वो कल। बाइक सब पैकिंग हो रहा है। ये रूम है 2 जन के लिए, अच्छा है रूम। और ये आपका मॉर्निंग व्यू है।
अभी 10:30 बजे है, अभी दिरांग सिटी में है। ये करीब 40 किलोमीटर है दूर बॉम्बडीला से, और अभी भी 5-6 घंटा लगेगा तवांग जाने के लिए। ये देख लीजिए दिरांग सिटी छोटा सिटी है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं तवांग रिटर्न का टाइम। ये हमारा लगेज, फिर अभी निकलेंगे।
finally we have reached to the Tawang. ये है लेक सेला पास के पास, ये है कैफ़े में। अभी हम मैगी खा के फिर रिटर्न होंगे, तवांग के लिए जाएंगे। ठीक है भैया। अंडा मैगी खा दिए, तो ये रहा तवांग का एंट्री, फिर कवर कर लिए। सॉरी तवांग बोल रहा हूँ, ये सेला पास है, तो अभी तवांग के लिए निकल रहे हैं। ये सेला लेक है जो कि काफ़ी कुछ जो है।